Okay. No objection other than just like to know what minute, second portions they're going to play. Okay, but the entire audio is in evidence, correct? Yes, Your Honor. And no Yes. objection? Okay, all right, And 3:43 in evidence. If you'd like me to read the specific minutes now, or we can provide it to council afterwards. Hey, do you want it now, or as you go? Okay. We intend to play minute 25, 37 seconds through 26, 28. 1 hour and 57 minutes, 21 seconds through 1 hour, 58 minutes, 54 seconds. 2 hours, 38 minutes, 52 seconds through, 2 hours, 38, 52 seconds through 2 hours, 39 minutes, 43. Court proceedings are really not तुम्हारे जो हमें मूवी में दिखता है. If you remember, हम लोग movies देखते हैं and we're like, oh mom, you know, like it's just engaging, enthralling, second by second thrills मिलते रहते हैं. ये twist, वो twist, reality court to like 7 घंटे, 8 घंटे के, you know, 7 घंटे का है वो. They just sit and they're like, इससे बीच में please can you, and there's a person who's like, okay, time check कर रहा है, time stamps क्योंकि उसको वहाँ पे play करना है. 3 seconds, and then 2 hours. Wow, somebody is noting this down through because they have to play this. 2 hours, 47 minutes, 20 seconds. Those are 4 clips. Okay. Okay. Thank you. You want to publish that to jury? It doesn't matter. It's just audio. Doesn't matter. I'm already distressed just by reading the title. Let's just थोड़ा सा आगे कर दें इसको. It's the promise you gave me a little while ago. So this is the audio now. I'm telling you, if you lost memory last night of kicking me out the door with the fucker hitting me, Again, and sorry. and your memory is gone from you kicking the bathroom door and hitting me in the skull. Damn. And I am Wait. sorry. If you have those memory, fucking, you know, divots. I was upset. There was a lot going on, okay, and I was but wait. on an Ambien. Okay, Like, but why? wait. Like, why are you obsessing over the fact that I can't remember it the way you remembered it? I said I was sorry. I didn't deny know it. that. I'm not talking about that. What I want. So now they're gonna play the other clip. Court proceedings, guys. Whoever thinks tomorrow, you know, हम lawyer बनेंगे and it's gonna be like movies. No, it's not to get you mad. It's not to get. It's just to get out of a bad situation while it's happening before it gets worse. In Australia, when we had the big fight where I lost the tip of my finger, at least 5 bathrooms and 2 bedrooms I went to. To avoid talking to me. To To avoid escape working it the- out. Not to avoid talking to you. If somebody has lost a tip of their finger, they're bleeding, they're probably like, oh, I might lose more things, more parts of my body that I would pretty much want to be attached. That's to the escape problem. the fight. You don't escape the fight. You escape the solution. No. You What is the solution? Mortal Kombat चल रहा है क्या? Mortality है क्या solution? You escape the solution. No. You escape figuring it out. I don't think. तुम बराका के साथ जब Mortal Kombat में फाइट कर रहे होते हो तो तुम वो solution चाहते हो जो बराका को चाहिए. Cannot work it out if you run away to the bathroom every time. That's why I beat you. Solution. अरे बाथरूम में जा रहा है. अरे यार तुमको हम बताते हैं. बैठो. प्रॉब्लम सॉल्व करनी है भाई. यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें. कम्युनिकेशन चाहिए. अरे फिर भाग रहा है. अरे यार कितनी बार बेल्ट कहाँ है? कितनी. Listen to me. Listen to me.
A boxer can't go 12 rounds without a fucking minute break. I'm not giving you a minute break. You do it at. He made such a dark joke. It's like, even though you're pummeling on me, even boxers who professionally fight with each other, they take minute-long breaks. Minute 3 at the beginning of an argument. No. There are rounds, man. And when it gets too fucking hairy, the ref splits them apart or whatever. But all I'm saying is, The ref splits them apart, not rest. So it gets that bad between them, or probably used to. Jesus, like it was full-on brawl. you can't have a solution if the argument just keeps mounting and mounting and mounting and mounting. I fucking go into the bathroom and sit on the floor. Bam, 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 here you come. I come out. Fight, crazy, escalated. I go split again, I go to another fucking bathroom or a bedroom or something. Knock, 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 bang, bang, bang. You kept coming to get me. Wow. I'm not the one who fucking throws fucking pots and Throws. That's whatever different. fucking else at me. That's different. That's one does not negate the other. That's irrelevant. It's a complete non sequitur. Just because I've thrown pots and pans does not mean that you come and knock on the door. Just What? because there are vases does not mean that you come and knock on the door. Really, I should just let you throw. I'm not saying that. You're saying that. You're putting words in my mouth and then making non I'm sequiturs. giving you a situation. No, you're trying to justify how you don't or do come to the door No, based I'm on whether I throw justifying- pots and pans. It's No, irrelevant. I'm justifying how you seem to think that there's this cowardice in me that runs away and I don't fight for you. Three mixes. One, two people. Second, violence. And third, the call कि तुम उस violent जो मेरे expressions हैं, जो मैं तुमसे, जो भी मेरे emotions उनको मैं जो violently express करता हूँ, उसमें भी तुम probably तुम्हारी गलती है. You're not fighting for me enough. And you're justifying that by saying I throw pots and pans? Okay, He's not justifying. He's saying that's why I run away, and it's not cowardice. It's self-preservation. cool. Let's No. talk about everything you do wrong. I'm not the one. That's not what he's doing. Jesus. So यहाँ पे देखो एक इंसान के just the way she's talking is accountability है ही नहीं, remorse है ही नहीं. And here's the thing, she does understand the concept कि whatever she does is wrong, but उस understanding यानी she does understand, oh yeah, throwing vase at somebody probably can cause God knows कैसी injuries to on a person is wrong, and I do that, and it's something that is bad about me. And अगर तुम बोल रहे हो तो क्लियरली तुम इसलिए बोलो कि तुम्हारी कोई इंटेंट है मुझे नीचा करने की. अच्छा मेरे अंदर खराबी चीजें हैं, तुम्हारी खराबी चीजों की बात कर लेते हैं. There is no remorse, there is no regret. There is, कई बार होता है लोग जैसे कोई इंसान है बहुत गुस्से में आके मैंने कहा वास थ्रो किया एट एनी फकिंग इन एनी ह्यूमन सिमुलेशन. अगर तुम किसी पे चीज फेंक के मार रहे हो जो कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट है भारी, दैट्स रॉन्ग. लेकिन लेट्स से तुम डोर बहुत तेज शट कर देते हो एंड जस्ट द इम्पैक्ट ऑफ डोर हिटिंग द तुम्हारा द एंड जो होता है, it's so loud, it may threaten the other person, it may scare the other person. The person may be like, that to me was ki where did that anger come from? Itna zyada kab se? I have never seen that side of you. And the person may actually be like, you know what, I apologize and I understand. I myself don't know, for example. You can have a self-explorative explanation about your own behavior. Therapy ये करती है, it explores कि भैया ये आ कहाँ से रहा है, ये है क्या. You can yourself do that with introspection. You can sit with yourself, you can sit with a pen and paper, you can journal things.
where you can write down your thoughts कि एक्चुअल में मैंने जो किया क्या फीलिंग्स चल रही थी. There's so many ways, but here's the thing, like एक इंसान जो ये बात कर रहा है and they immediately think, oh, इस पॉइंट से तुम जीत सकते हो, and they are seeing the entire conversation as जीतना कहाँ है. तो तुम जीतना चाहते हो इस पॉइंट से जहां पे क्लियरली वीकनेस है क्योंकि ये गलत है, पॉइंट्स के हिसाब से गलत है. तो हेड्स तुम्हारी बात कर लें, लेजर चल रहा है, बैलेंस शीट है. Tell Travis what just happened. Oh, you told me to do it. You told me to. You said, go do that. I said, no, tell him what just happened. And I lied. And that you punched me in the You're right. fucking thing. And You figured it out. And you said, no, no, I didn't. What the fuck are you talking about? And I didn't watched punch you lie. And then I didn't punch you, and by then the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. She's saying I was slapping you, I was not punching you, and that's such a misunderstanding. Totally, yaar. So here's, by the way, linguistically there's actually a distinction in America and Indian cultures में, जैसे Indian culture obviously हो गया, slap is a prominent thing, the way you express your anger. We slap people. मर्द भी मर्द को slap करते हैं. मर्द या बच्चे को मार रहा था उसमें हम चाटा मारते हैं, स्कूल में भी हमारे चाटे पड़ते थे. In America they actually do use sometimes, you know, जैसे अभी तुम्हारा ये वाला विल स्मिथ वाला सिचुएशन होता है, उसमें भी lot of people typed कि punched, and I was like, no, that was a slap. And then I realized, oh, they don't have in their, I would say, तुम्हारा exchange जो होता है ना, दो लोगों के बीच में अगर violent exchange हो रहा है, slap as a popular means to execute violence. So she here is using this. The point being, I was standing, और फिर मैं जो भी कर रहा था, and you hit me. Hit is such a good word, right? यहाँ पे you hit me across the face, and it doesn't matter वो punch है या slap है. Either are impactful. And she's like, no, technicality समझो, तुम kind of यहाँ पे victim की तरह play कर रहे हो, technicality समझो. I did not punch you, जो कि गलत है clearly. I was hitting you, यार. तुम अगर तुम मीनिंग सारा बदल दोगे फिर वो ऐसा इट में अपीयर लाइक कि वायलेंस की बात कर रहे हैं ना, हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, प्लीज चीजों को ना वो मत करो, लाइक डोंट मैनिपुलेट द सिचुएशन. सी वेयर हर हेड इज एट, एंड दीज आर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस पर्सन. बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे दे विल जस्ट बी लाइक कि ओके जस्ट रिवर्स द फकिंग रोल्स, रिवर्स, लाइक इमेजिन अ गाय सेइंग दैट. वो तो ऑब्वियस है, बोलना भी नहीं चाहिए ये on how bad it is. And if you need to do that exercise, do it. Do where a guy is like slamming the door onto the person's face, जो कि किसी इंसान के हाथ का पार्ट उड़ा दिया and the person has to escape over the house. You know, think of all those things. यहाँ पे एक लड़की के साथ हो रहा है ये and लौंडा कर रहा है उसके साथ, और वो शादी में लॉन्ग टाइम से, और आप सुन रहे हो how hatred, how much तुम लौंडे फील करेंगे, इस इंसान के साथ ये करना चाहिए. And that's the thing. इसका मतलब ये नहीं है, ये होता नहीं है. Violence, abuse, it's such an important thing, and I really hope we start to see this as a issue जहाँ पे हम allow करें abuser, चाहे वो कोई भी gender का हो. I understand statistically men obviously higher इस चीज में होते हैं abuser in domestic violence cases में. So I understand काफी लोग का ये kind of वो बन जाता है आपका एक fixed way of seeing it कि men are abusive. Not all men, but अगर ऐसी कोई domestic violence की situation चल रही है उसमें men ही कर रहे होंगे. We come into that idea, and also we come into the idea कि ओ लड़की के साथ हो रहा है तो because statistically men करते हैं ज़्यादा abuse में, reported जो abuse होती है उसमें domestic violence के, तो इंसान कहेगा ओ यार ये you know clearly इसी के साथ हुआ होगा. And these are the things जहाँ पे पता है critical thinking changes the game entirely. क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आपको कहती है ह्यूरिस्टिक्स में मत सोचो, ये इंसान की बात हो रही है, मत सोचो ह्यूरिस्टिक्स में, शॉर्टकट्स यानी कि रुक जाओ 2 सेकंड के लिए. 2 सेकंड के लिए आपका जो भी रिकॉर्डेड फ्रेमवर्क है कि इस स्थिति को मैं इसी परिभाषा में ही देखूंगा, उसमें मत देखो. कभी कभी चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख लो, कभी कभी थम जाओ, कभी कभी जजमेंट करने से पहले, किसी पे चीखने से पहले, किसी पे चिल्लाने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी पे बहुत तगड़े लेवल पे एक्यूजेशन लगाने से पहले 2 सेकंड थम जाओ. मैं नहीं कह रहा कि उसने नहीं किया, ये भी गलत है, वो भी एक जजमेंट होगा कि वो निर्दोष है, तुमने कैसे पता कर लिया. थम जाओ,
शांत होना सीखो। बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में शांत होना। एक सेकंड में भावुकता में दौड़ के तलवारें लेके मशाले लेके आग लगाने किसी के घर में जो भाग जाते हैं ना लोग, शांत होना सीखो। शांति 2016 में 2018 में जब भी ये केस हुआ था भाई, मुझे याद है, ओपेट पे ओपेट पढ़े मैंने, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, पता नहीं किन किन पे, न्यूयॉर्कर, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग। मैं वेट कर रहा हूं उनके क्या होंगे अब, किस लेवल पर डिफेंड करने वाले, क्योंकि इतना ज्यादा लिखा गया था इसके खिलाफ। मैंने उस पर बात भी करी है, इस केस मैंने ड्रॉ इन रियल में बहुत पहले बात कर रखी है, 2-3 साल। ये सेम बात है जो भी मैं बोल रहा हूँ। Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. तो exactly the impact remains the same. No, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. Wow, so she's condescending him कि हाँ हाँ तू तो बड़ा फाइटर है, तुझे तो बहुत पता होगा डिस्टिंक्शन इसमें। Just imagine कि इंसान की कोई भी चीज लेके मेरी गलती नहीं है और तुम्हें नहीं पता। खतरनाक लेवल पे गैस लाइटिंग, खतरनाक लेवल पे इंसान को ही डाउट कराना उसकी रियलिटी, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। No, when you fucking have a close You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch. So I'm sorry I hit you like this, which kind of यहाँ पे तुम्हें सुनने में आ रहा है उसके बाद में she's kind of minimizing the impact. It was like this, like this. Probably that's something what she did. And this is also very dangerous. When a second party, याद रखना लाइफ में ये आप सबकी जिंदगी में कभी भी आ सकता है, when other people tell you how you should feel, this is so scary कि अगर तुम्हें कोई भी चीज का तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम अगर रिलेशनशिप में और तुम्हें घाव लगा है किसी चीज को लेके, कोई चीज लेके तुम्हें परेशान कर रही हो सकता है बहुत माइन्यूट चीज हो, सामने वाले को कभी डिक्टेट मत करने देना तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए इसके बारे में। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारा हक है जानने का। तुम बताओगे सामने वाले को कि तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कैसा फील करना चाहिए, मैं जैसा फील कर रहा हूं मैं वैसा फील कर रहा हूं, तुम्हारी जॉब है सुनना। मैं यहां एक्सप्रेस कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, और अगर आप सुनने की क्षमता नहीं रख सकते तो आप फिर मेरी जिंदगी में कभी भावनाएं समझ नहीं सकते, और रिलेशनशिप में फिर ये प्रॉब्लम आती रहेगी। ये इंसान हमेशा कहेगा कि मैं बताऊंगा मेरे दिमाग में कैसे जो भी चीज हुई जिससे हो सकता है तुम हर्ट हुए हो, छोटी चीज भी हुई हो, उससे मैं एस्केप कर पाऊं, इसलिए मैं तुम्हारी इमोशंस की रियलिटी एडजस्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही छोटी चीज थी, तुम ऐसा फील कैसे कर सकते हो। मेरे साथ हुआ है लाइफ में, पता है, कभी कभी बहुत माइनर एग्रेशंस कहते हैं इनको, माइक्रो एग्रेशंस। रिलेशनशिप होता है बहुत छोटी चीज जो कि सामने वाले को शायद वो भी ना हो, लेकिन तुम्हें लगा कि मुझे पसंद नहीं आया ये। मैं हमेशा कम्युनिकेट करता हूं। अच्छा पार्टनर वही होता है जो शांति से बैठ के सुनता है और कहता है यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड। सेम वाला तुम्हें दूसरे पार्टनर को भी अलाउ करना पड़ेगा। इंसानी भावनाओं का हक और रोल और ऑटोनॉमी तुम्हारी है कि भाई अगर मैं कोई चीज फील कर रहा हूं और अगर मैं कंसर्न में, मैनिपुलेशन में नहीं, लेकिन फिर इसको भी खतरनाक एक वो है इसका ग्राउंड जहां पे एक इंसान कुछ भी को मैनिपुलेट करने लग जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, टॉकिंग अबाउट एक इंसान जो कि एक्सप्रेस कर रहा है विद कंसर्न कि हे आई फेल्ट बैड। यहां पे ही टेलिंग कि तुम डिक्टेट नहीं कर सकते जो मैंने पेन फील किया, वो कितना पेन था, इतना कम पेन था, उसको ट्रिविलाइज मत करो, मुझे बुली मत करो या ह्यूमिलिएट मत करो ये कहेगा कि मैं मर्द कम हूं क्योंकि मैं बहुत फाइटों में नहीं रहा, which she's doing. Punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? How? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Jesus, man. Jesus fucking Christ. भाई ये अगर चीज would be the moment, I think it was probably for him as well, the moment जहां पे you just go like हाथ जोड़ो, दोनों स्पेस को एक स्पेस में रखो और इंसान से कहो नमस्ते, उठो और जिंदगी भर के लिए चले जाओ। ना कभी कल बात करेंगे, ना परसों क्या बात करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, काउंसलिंग पे जाते हैं। भाई अगर ऐसी चीजें इंसान कह रहा है कि तुम्हें उसमें वो काइंड ऑफ ये भी मतलब थप्पड़ मारा, घूंसा मारा तो मारा, वो भी मैंने जो मारा उससे तुम्हें इतना दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ह्यूमिलिएशन इंसान को और एज अ मैन कम फील कराओगे, तुम मर्द नहीं, थप्पड़ तो मारा सहल है। उसके ऊपर क्या कर रहे हो तुम कि अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो तो तुम बिच कर रहे हो। बाप रे बाप, लेवल्स देखो।
ऐसे इंसान के साथ आप कभी जिंदगी में आप हमेशा डोर मैट रहोगे. ऐसा लड़के भी हो सकते हैं. These are not, हम यहाँ पे एक लड़की का आर्ग्यूमेंट सुन, इसका मतलब एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सेक्स या जेंडर या जो भी चीज रखना चाहते हो उसको हटा दो. यहाँ पे इंसानों के हिसाब से सुनना इसको. ये एजुकेशन है. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. वाओ, सी. सोचो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ किसी के साथ भी कोई इंसान बुली, ये तो बुलिंग है बे. मैंने तेरे को मारा, अबे काहे वाइन कर रहा है, यूर अ बेबी. मजाक नहीं का चल रहा है दो लोगों के बीच में. एक इंसान जेन्युइनली कह रहा है कि तुमने मुझे मारा, यू नो, इट्स नॉट कूल. इमेजिन कर यही चीज वो घुमा के इसके दे देता, अगर कहता हाउ डू यू फील, शी बी लाइक ओह इट हर्ट, डोंट बी अ बेबी. बट वही है ना, वायलेंस का वायलेंस में रिस्पॉन्स भी सत्यानाश है. फिर सामने वाला कहेगा मैं अब्यूज, तुम भी अब्यूज, सब अब्यूज. फिर अब्यूज घुस गई. सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है दोनों हाथ लो ऐसे और उनको आपस में जोड़ लो. ना किसी गाल में छुआओ, ना अपने जो लगा है उसको दिल में रखो और कहो हाथ जोड़ के नमस्ते. और नेक्स्ट डे से 50 तरह की टाइप्स की थेरेपी में पार्टिसिपेट करो. जॉब में जाओ, एक थेरेपिस्ट पकड़ो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो सकता है, साइकोथेरेपिस्ट पकड़ो, उनको अपनी पूरी स्टोरी बताओ ये सब हुआ मेरे साथ. दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ बहुत ढंग से और अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू कोर पहचानने में जाओ. तो बिहेवियरल थेरेपी में अगर तुम हो, वो भी हेल्प करेगी तुम्हें कॉन्शियस लेवल पे. स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, किसी संस्था में जहां पे वो तुम्हें अकेला नहीं, आई वुडंट से अकेले वाली, विपासना बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा एकदम से अगर किसी के लिए. पहले उस चीज को बाहर लाओ, उस चीज को एक्सप्रेस करो और योगा मेडिटेशन करके अपनी जीवन में शांति लाना शुरू करो. शांति और एकांत बहुत खूबसूरत चीज़ होती हैं, क्योंकि एकांत में कभी कभी ना तुम ना चाहते हुए भी चाहते हुए अपने आप से मिलना शुरू करोगे. और बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि तुम अपने आप को हो सकता है दोस्ती करना चाहो, अपने से प्यारी बातें कहो. तुम अपने कभी कभी हो सकता है साथ बैठ के गले में हाथ डालो, तुम कहो मैं तेरे साथ हूँ. ये तभी हो सकता है जब एकांत शांत लाओ. और योगा करना, मेडिटेट करना, अपने साथ बैठना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर रहा है, यानी कि अपने साथ मिलना और उसका कॉन्फिडेंस और करेज एकत्रित करना एक दूसरे इंसान से जिसका भी गोल आपके साथ ये है, जो कि आपको लिटरेचर के हिसाब से हेल्प कर रहा है. लिटरेचर किस चीज की? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो कि आपकी जगह पे रहे हैं, उनकी कैसे हेल्प हुई है. दिस इज व्हाट थेरेपी इज. इट्स नॉट आसमान में थ्योरीज नहीं है वो. दिस इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. साइकोलॉजी इज नॉट कि कार्ल यूंग एंड फ्रॉइड, वो नहीं रही साइकोलॉजी. Psychology now is an empirical science, यानी कि the things we are going to share, the techniques we are going to share are techniques जो कि time after time or not time after time, over a long period of time बहुत बड़े mass amount of patients के साथ टेस्ट किया गया, and these things work. They have led to good conclusions or resolutions, happy endings for them. So हम आपको वो टैक्टिस करेंगे based on जो आपकी problems हैं. So it's good. वो गेयर्ड हैं, वो स्टेप बाय स्टेप गेयर्ड है आपको कॉग्निटिवली हेल्प करने में. कॉन्शियसली ये हो गया, दूसरे तरीके अलग होते हैं. सब तरीकों का फायदा उठाओ, सबका फायदा उठाओ. वेस्टर्न भी हो, ईस्टर्न भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, सब चीजें जो आपका भला करेंगी, बाहर से भी, दिमाग से भी, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, स्पिरिचुअली, सब होलिस्टिक अप्रोच इसको कहते हैं. You are such a baby. Grow the fuck up, Did you start Johnny. physical fights? I did start a physical Yeah, fight. you did, so I had Because- to get the fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. What was just played on the audio recordings was very much the tone and the aggression and the attitude and the need for a fight from Ms. Heard. That Miss was- Heard. I don't know if that was some need for attention, but I don't. That was a sound that I had gotten very used to. 100%. You can see from their interaction that this is not
उसके तुम सिंपल यहाँ पे पता है लोग बहुत सारे लोग होंगे जो कि काइंड दिल गेट लॉस्ट इन एम्बर हर्ड्स तुम्हारे क्या कहें इसको हम हर एक्सप्लोसिव वे ऑफ लाइक डिफेंडिंग हरसेल्फ या फिर जो भी चीज़ें बोल रही है उसके तुम्हारे उसके मीनिंग में लोग फंस जाएंगे कि अरे ये कैसे बोल सकते कोई बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लुक और जस्ट हियर हाउ क्वाइट एंड हाउ काम एंड हाउ काइंड ऑफ मोनोटोन Johnny Depp is. You know what that means? This person is used to this. Think about this. He's not reacting कि तुम बोल क्या रहे हो, which means he's already said that probably 20th or 200th conversation before. And now he's just basically saying you are doing this. And she's like, grow the fuck up. You're a baby. And he's like, it's still violence. It's violence. And you have to understand. Which means इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन और जो भी फाइट है जो बोल रहा है दिस इज प्रिटी कॉमन एंड दिस इज नॉट समथिंग जो वंस अ वाइल हुआ है एंड उसको प्रपोर्शन में ब्लो किया जा रहा है बिकॉज वंस अ वाइल जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें एक एक्साइटमेंट दिखेगी एक सरप्राइज सेंस ऑफ सरप्राइज दिखेगा बिकॉज द पर्सन गेट सरप्राइज कि ये क्या हुआ वो आवाज में दिखेगा यू जस्ट डिड दैट व्हाट डिड यू डू तुमने हाथ कैसे उठाया यू गेट इट द फर्स्ट टाइम जब भी चीज होती है तुम्हें वो इंटरेक्शन में दिखेगा कि दिस इज न्यू दिस इज नॉवल इन देयर डायडिक रिलेशनशिप या फिर इन देयर इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस नो दिस लुक लाइक समथिंग दे हैव बीन थ्रू शी इज जस्ट एक्टिंग लाइक कि मुझे आता है ये जो सिचुएशन है इसमें रिस्पॉन्ड करना सो आई एम टेलिंग यू मेरे पास एक रिकॉर्डेड वो है तुम्हें नीचे कराना जो मैंने 3 चीजें बताई एट द एंड तुमको बता देना तुम तो बच्चे हो मैंने तुम्हें मारा नहीं मैंने ये किया इसको ट्रिवलाइज करो तीसरा तुम्हारा लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट सो शी हैज अ मैकेनिज्म the squabbling, एंड अब्यूजर्स हैव मैकेनिज्म्स बिकॉज दे नो देखो एक और चीज बताना चाहता हूँ फिजिकल अब्यूज के बारे में रिलेशनशिप्स में इट नेवर स्टॉप्स दिस इज अ मिथ तुम्हें लगता है दैट अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो एक बार हो रहा है एक हफ्ते में एक ही बार हो रहा है अच्छा एक बार हुआ अब नहीं होगा रुक जाएगा इट्स अ फकिंग मैथ देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अगेन इसमें भी रिसर्च फ्रॉम विक्टिम्स लार्ज स्केल जब तुम्हारे स्टडीज करते हैं वो ड्रॉ करते हैं तुम्हारे डेटा फ्रॉम पीपल जिनके साथ लाइफ में रही दे फाउंड आउट कि इट डिडंट स्टॉप इट कंटिन्यू आई थिंक बहुत बड़ी चांस होती है 90% और समथिंग अराउंड दैट इट विल हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन the raising of the voice to essentially excommunicate anything that I had to say about the situation. But then, and I do remember that incident. I believe that's from the when I was in the bathroom, and I was in fact taking a shower, and this was in penthouse 3, and she came banging on the door. I didn't answer. I was in the shower. I couldn't deal with it. I didn't want to deal with any more of that sarcastic, demeaning, aggressive, violent, toxic spew. And so I was taking a shower and I didn't want to answer the door. She kept banging. And then I finally got out of the shower and I opened the bathroom door about just that much, just so I could have a good hold on the door in case she tried to burst in. And I was right, she did. She was, bathroom doors go in, she was pushing all her weight on the door, trying to get in. And I was pushing back because
I didn't want to let her in because I obviously didn't want the confrontation. She was not in best of moods. You can hear. So when I was pushing the bathroom door, trying to close it, and was almost closed, she suddenly kind of yelped in pain. And she screamed out, "Ow, my toes or my foot or something." And so in that second, I thought possibly her foot had gotten Or her caught thumb. under the door. Yeah. Toe, I'm sorry. Which would, of course, not feel great on the foot or the toes, so I thought she was maybe injured. So I knelt down to have a look. The door was still, it was still pretty well about that much open. And when I knelt down on my hands and knees to look at her foot to see the injury, she kicked Yeah, I thought this was going the to happen. bathroom door In his... into my head. Yeah, she kicked the bathroom door into my head, and I was completely taken aback by such a corrosive, horrific move. So I Yeah, a stood ruse. up, and I believe I stood up, and at this point the door was open. I stood up and I said, I think I said, "What the fuck was that? What the fuck was that?" And the next move was just a bang. It just she clocked me in the jaw. Wow, so this was like... See, that's what I was saying a while ago. Like, एक बार नहीं होता जब वो कह रही थप्पड़ मार के कि ये कुछ नहीं है, तो यानी उसके लिए ये यूजुअल ये नॉर्मल है दिमाग में मारना दूसरे इंसान को. And that was another shocker. How So long she- after that did you start recording? Sorry? How long after that did you start recording that audio recording that we just heard? That audio recording was about her trying to make less of what had happened. In fact, trying to make less of what had happened by repeating some story to me that didn't make any sense. And Confabulation, यही जो हम बात कर रहे थे, जो अभी इसने ऑडियो रिकॉर्डिंग में करी. आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग. आफ्टर शी बीट हिम लाइक दिस, शी प्रॉब्ली उसने फिर उसको ट्रिविलाइज किया होगा, उसको ह्यूमिलिएट किया होगा, उसको कहा कि अरे कुछ भी नहीं था, तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो डोर को हिट किया, तुम्हारे मुंह पे लग गई, मैंने तुम्हें बस ऐसे हाथ किया, तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो. ही मस्ट हैव रियलाइज्ड, ओ क्रैप. it certainly didn't make any sense since I was there and I was the target. So I wanted some confirmation from someone with some semblance of a mind that could understand what was happening. I I wanted understand. Mr. Gaslighting is scary. This is gaslighting, this is confabulation. Confabulation basically gaslighting के अंदर आ जाएगा. इंसान जो आपकी रियलिटी को बताने लग जाए कि आप कल रॉन्गली परसीव कर रहे हो. अरे कुछ नहीं है, अरे तो कुछ भी नहीं था. आपका जो सेंस ऑफ रियलिटी है, सेंस ऑफ टेक था उस चीज़ पे, वो उसको क्वेश्चन करने लगा ताकि आपने दिमाग समझ लगाओ कि सच क्या था. ये मैं क्या एक्चुअल में झूठ बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीटली मिस्टेकन हूँ. McGivern to come up, and I asked her to tell him what had just happened. And her answer was essentially, "I don't know what he's talking about. Wow. Nothing happened. He's fine." And once again, I told Mr. McGivern, time to leave the premises. Mr. Depp, I'd like to show you now what's been marked as plaintiff's Okay. Okay. This is
terrible stuff, man. This is terrible, but also important. I absolutely love कितना honest है इंसान. You know, he's basically finally, and I absolutely love जो स्टोरियाँ बता रहा है. जो लोग सुन रहे होंगे उन्होंने ओपेड या आर्टिकल्स लिखे थे इतने ज़्यादा against him in all these newspapers. यार दबा के लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे इस पे. I used to just think, you know, I read these newspapers, I read them. एंड ये लोग ये पब्लिश कर रहे हैं एंड इनके पास कोई एविडेंस नहीं है. कह रहे हैं बस ये इसीलिए औरतों को लोग कोई मानता नहीं है. मैंने ऐसे आर्टिकल पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, पता नहीं कहाँ का. आई वाज जस्ट लाइक क्या. अबे फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सारी बहुत पहले लीक हो चुकी हैं बाय द वे, एंड क्लियरली उसमें सब कुछ हो रहा है. मैंने कहा तुम्हारे पास ये सब है. एंड दे जस्ट kept and they kept supporting Amber Heard and you know उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. देन आई वाज लाइक क्या हो गया है बे दुनिया को, क्या हो क्या गया है.